Hey everyone, my name is Srishti Mishra, a legal intern in LexClick and Company. So today in this video I will talk about offenses related to marriage. Before I just start with my video, I would like to tell that this video does not solicit any kind of promotion or advertisement under the guideline of Bar Council of India, and sole purpose of this video is only for educational purpose. Now let's get started with the video. So, offenses related to marriage. There are four kinds of offenses. They are related to offenses related to marriage. First one is mock marriage deals with section 493 and on section 498. Bigamy deals with section 494 and section 495. Adultery deals with section 497, and last, that is criminal elopement, deals with section 498. Now, mock marriage deals with two sections. First, section 493, second, section 498. Now talking about section 493, means when a man causes duplicity to a woman who is not his wife, but make her convenience to believe her she is his wife, and does intercourse. In this, if the offense is occurred, then in this the punishment is imprisonment for 10 years and also shall liable for fine. Now moving ahead to second offense, that is section 498, deals with the accused. The accused here know that no validity marriage will be affected, but still goes through some form of marriage like dishonesty or with fraudulent mind. In this, what happened, for suppose I give you example, that is A and B. Okay, A and B. A is men, B is women, और women के father भी हैं, ठीक है, C. So B गर्ल चाइल्ड है, इन विच सी के माइंडसेट में ये है कि जब मेरी गर्ल चाइल्ड अटेन कर लेगी 22 ईयर्स ऑफ एज, जब उसकी शादी मैं करवा दूंगा या वो खुद कर ले जो भी उसका मन करे, उसके बाद शादी होने के बाद मैं उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, ठीक है. सी वांट दिस, और बी को पता है, बी उसकी बेटी है, अगर बी को पता है और वो फ्रॉडली माइंड से, डिसऑनेस्टली माइंड से, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी इन हर नेम उसने शादी करी. इन दिस बी ने ऑफेंस किया है, मॉक मैरिज का ऑफेंस किया है, और वो लाइबल होगी पनिशमेंट की. नाउ मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल. सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं, ए बी एंड सी. ए लड़का है, मैन, बी विमेन एंड सी फादर विमेन की. इन दिस बी को कुछ नहीं पता, बी डज नॉट नो दैट उसके फादर की माइंडसेट ये है, बट उसकी जगह पे ए को पता है, और ए को पता होने के कारण, प्रॉपर्टी को हड़पने के कारण उसने मॉक मैरिज करी, उसने नकली शादी करी. ड्यू टू इन दिस केस A is accused, A is done offense under the section 498. ठीक है, 498. Now moving ahead to third example, that is if I say that A और B दोनों को पता था that कि B के फादर ये चाहते हैं, A और B को दोनों पता था, और डिसऑनेस्टली माइंड से उन्होंने शादी कर ली, और उन्होंने ये सोच लिया कि आफ्टर दैट हाफ ऑफ हम अपनी प्रॉपर्टी को बांट लेंगे. सो इन दिस केस A और B दोनों जॉइंटली एक्यूज है, दोनों ने मॉक मैरिज का ऑफेंस किया है. सो जो हमने सेक्शन 493 के बारे में बात करी, इन दिस ओनली मेल कैन बी एक्यूज्ड, ठीक है, मेल कैन बी एक्यूज्ड, बट इन सेक्शन 498 बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी एक्यूज्ड एज एन इंडिविजुअल, और जॉइंटली दे कैन ऑल्सो बी एक्यूज्ड. सो द टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, उसका मैंने punishment deals with 10 years and also shall be liable for fine. And second section 498, punishment is imprisonment and for 7 years and also may be extended and also liable for fine. Now moving ahead, that is bigamy. Bigamy deals with section 494 and section 495. First talking about section 494, if second marriage during the subsequence of first marriage is illegal in India and relationship arising from it has no validity, bigamy became offense
only when husband and wife is alive, and it is an offense even if it is performed with the consent of his first wife. Now, section 494 deals with marrying again during the lifetime of the husband or wife. Of description of the term may extend to imprisonment of 7 years and also liable for fine. And in this case consent is there from first wife. Consent होने के बाद भी first wife से बायोगेमी का offense is performed by anyone, any man, and in this case he is punishable and also liable for fine. Now moving ahead to section 495 deals with same offense with concealment of former marriage from person whom subsequent marriage is contracted. So in this the punishment is imprisonment for 10 years and also liable for fine. बट अगर हम सेक्शन 494 की बात करें उसमें कंसेंट है वाइफ के थ्रू, फर्स्ट वाइफ के थ्रू, बट बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच. दैट इज़ फर्स्ट में है कि पनिशमेंट दोनों की अलग है. पनिशमेंट फर्स्ट में है 7 years एंड सेकंड में है 10 years. और सेकंड मेजर डिफरेंस वो ये है कि फर्स्ट में कंसेंट ऑफ वाइफ इज़ देयर एंड सेकंड कंसेंट ऑफ वाइफ, और प्लस फॉर्मल जो उसकी जो सेकंड वाइफ होने जा रही है उसका भी कंसेंट नहीं है. Now moving ahead to adultery, whosoever has sexual intercourse with a person to whom he knew or has a reason to believe to be the wife of another man without any consent or convenience of the man, this offense is not amounting to rape, but is guilt for the offense of adultery. So in this, imprisonment is either description for the term or may extend it to 5 years and also liable for fine. And in this adultery, in this wife is not punishable as an abettor. Now moving ahead to fourth offense related to marriage, that is criminal elopement. Criminal elopement, enacting or taking away or detaining with criminal intent of married women. In this, whosoever take or entices away women who is and whom no he has reason to believe to be the wife of any other man from the man or any other person having the care for her on behalf of that man, may with intent that she may have illicit intercourse with the person concealed or detained with the intent that such person shall be punishable under the imprisonment for either of 2 years. The terms may be extended to 2 years and shall also be liable. Suppose A और B मैरिड कपल्स हैं, A मैन B विमेन मैरिड कपल हैं, बट इनके बीच में C आ जाता है और C what he do that वो बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करता है बी को और उसको टेक अवे कर लेता है ए से अपने पास. इन दिस व्हाट हैपन, द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल अलॉटमेंट इज डन. और अगर वो अपने साथ ले जाता है जस्ट कि इलिसिट इंटरकोर्स विद हिम, बट वो करता नहीं है, उसके माइंड फ्रॉडली माइंड होता है कि हाँ आई विल, बट ही डू नॉट डू इंटरकोर्स विद दैट पर्सन. सो इन दिस द imprisonment for either description of the term may be extended to 2nd year and also he may be liable for that. So these all are the offenses related to marriage. That first is I told you that first is mock marriage, second is bigamy, third is adultery, and lastly criminal elopement. Now thank you everyone for watching my video. I hope you like it. Please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to channel. Let me know your feedback in the comment box. Till then, take care. Goodbye.